स्टूडेंट टाइप स्मार्ट काम करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। Hello guys, welcome to Manware. Guys, we were getting many comments that we have completed 12th standard from distance education or graduation from distance education and we want to apply for law 3 years or 5 years. So the first question is that are they eligible for applying law 3 years or 5 years by distance and open learning education? And the second comments were that if we have gap in the education, gap can be due to financial problem or due to like we are facing pandemic, so many student has taken drop from their studies. Now due to this drop there is a gap in the education, so they want to apply for law 3 years or 5 years. So the first question will come into the student mind, are they eligible to apply for law 3 years or 5 years due to gap? ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत सारे स्टूडेंट का है एंड ये वीडियो बनाने का मोटो ही यही है कि आपका जो प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन मैनवर के प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। सो आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे जो ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे तो उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। गाइज, वी हैव लॉन्च अ न्यू यूट्यूब चैनल विच इज वेरी स्पेसिफिक फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. So we will put all the details about law entrance examination in this particular channel. So link of this particular channel, it will be given into the description box. Do check the description box and subscribe to this channel also. Now let us discuss about distance education. In 12th standard, students generally go for NIOS, that is National Institute of Open Schooling. And in Maharashtra, there is a 17 number private form for 12th standard student where student can fill this form and they can do 12th standard by distance education. If I talk about graduation in distance education, so IDOL is there, Institute of Distance and Open Learning. In this, there are open universities like Indira Gandhi National Open University, Dr. B.R. Ambedkar Open University, Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University, Netaji Subhas Open University, Nalanda Open University, and there are many more. Guys, these are the distance and learning open university which are reputed and which are UGC listed. If you are doing distance education from non-UGC listed and non-reputed open university, you may not be eligible for many courses. Now let us discuss gap in the education. So first gap is after 12th student can take gap due to certain problems, and after graduation also student is taking gap, like if they are going for a diploma course or any master's course and due to certain problem if student is going for a job or some preparation for some entrance examination, यहाँ पे students के education में gap होने के सबसे ज़्यादा chances होता है. And after taking gap, if student is planning to apply for law 3 years or 5 years, so first question is, are they eligible for law 3 years and 5 years with the gap in the education, and how they can apply in a law college. So first eligibility criteria for appearing Maharashtra LLB 5 years integrated courses, the educational qualification is those candidates who have passed 10th and 12th standard examination in regular mode, distance mode, open schooling, open mode by filling 17 number form and completed SSC HSC from National Institute of Open Schooling, formerly known as National Open School NOS, are eligible for LLB 5 years CET एग्जामिनेशन. सो गाइज, अगर आपका एजुकेशन कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका एजुकेशन रेगुलर नहीं है, आपने डिस्टेंस से किया है या आप प्राइवेट स्टूडेंट है, महाराष्ट्र के स्पेशली अगर बात करें तो 17 नंबर का जो फॉर्म होता है वहाँ से स्टूडेंट प्राइवेट फॉर्म भर के 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन LLB 5 years integrated program. For that you need to give Maharashtra CET examination. And guys, this particular eligibility criteria, it is made by State Common Entrance Test Cell, that is nothing but CET cell, which has been established by Maharashtra government. Provided their education pattern should be 10+2, that is 10th and 12th pass. Now यहाँ पे जो student का gap in the education है, like
अगर उनको LLB 5 इयर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो उनके लिए मैंडेटरी क्या है, दे शुड पास 10th एज वेल एज 12th। अगर आप 10th पास है एंड 12th फेल है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो 12th है वो पास करना जरूरी है, वेदर यू आर फ्रॉम रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड, इट डज नॉट मैटर। एंड गैप है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, बट आपका 10th एंड 12th ये दोनों ही क्लियर होना चाहिए। एंड गाइज, इफ यू आर हैविंग गैप देन सर्टेन कॉलेजेस में डिमांड फॉर गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना कैसे है कि एक एफिडेविट होता है जिसमें आपने गैप क्यों लिया, वो गैप जस्टिफाई होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल to apply for LLB 5 years integrated program. Now eligibility for appearing to Maharashtra LLB 3 years degree course. Now what is the educational qualification? Candidate who have passed 10th 12th through regular mode, distance mode by filling form 17 number IOS National Institute of Open Schooling or equivalent qualifying examination for HSC plus 3 years graduate examination or 2 years post-graduate examination through regular mode, distance mode or correspondence mode, open university, deemed university, ideal institute for distance and open learning are eligible for 3 years CET examination. That means if you are completing your 12th standard by distance mode or graduation by distance mode, open schooling, IDOL से अगर आपने complete किया है या deemed to be university से कंप्लीट किया है, डिस्टेंस लर्निंग से आपका 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लॉ 3 इयर्स CET एग्जामिनेशन। एंड अगेन दिस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बीन मेड बाय स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। प्रोवाइडेड देयर एजुकेशन पैटर्न शुड बी 10 + 2 + 3 SSC HSC 3 years graduate degree and 2 or 3 years post graduation. Now this particular eligibility criteria is especially for those students who are having gap in the education. You need to have 10th 12th and graduation for applying 3 years LLB CET examination। और gap है आपके education में तो आपको गैप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन इफ यू आर डूइंग डिप्लोमा कोर्स या मास्टर्स आपने किया या फिर आपने जॉब किया तो उसका सर्टिफिकेशन होता है। डिप्लोमा अगर आपने किया तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, मास्टर्स है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें बैंक स्टेटमेंट्स होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न जो होगा, ये सारी चीज़ें जस्टिफिकेशन होता है। और इनमें से भी अगर आपने नहीं कुछ किया है, आप कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, देन आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, एक एफिडेविट रहता है जिसमें वाई यू हैव टेकन गैप, वो सारी चीज मेंशन करनी पड़ती है उस एफिडेविट में, एंड देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर LLB 3 years program. Guys, for doing law 3 years or 5 years, you need to give Maharashtra CET examination. So you can join our online program. You can order books, mock test, sectional course, full course. You can also attend live 2S. For online program, you can call on our board line number 8828 581455. You can also visit to our website manvaredu.com/law entrance. We have classroom preparation at Mumbai. Our branches are at Borivali, Dadar, Vasai. Guys, this is all about in this video. Hope you like this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to our channel. Thank you.